Dear students, in 9th standard Sanskrit, chapter 2, Kulasya Acharah, the family tradition or the family conduct. In this chapter, in the first two part, we have seen that there is a bird Chataka, he is a child of Chataka, and according to the tradition of Chataka, they can drink only the rain water. They cannot drink any other water, pond water or any other water, right? That we have seen. And the mother advised the child not to drink pond water, and yet the child did not hear the words of his mother, and he went to drink the pond water. That we have also seen. But when he was going to the pond, on his way he became tired. And as he became tired, what did he do? He sit down at one place, and on that place there was the house of a farmer. And that farmer was on his deathbed. Okay? And at that time his son was telling him the tradition of his family, that in our family, he said to his father, that in our family we are not able, we cannot take the wealth of others. And he told his father that he found wealth, the bag of wealth on the way. He wanted to take that bag, and he thought also that by this his poverty will be removed. But he did not take the bag. He followed his family tradition, his family conduct. यहाँ तक हमने किया था, राइट स्टूडेंट? कि वो फार्मर के बेटे ने नहीं लिया जो बैग थी वो, क्योंकि उसकी फैमिली कंडक्ट थी कि हम किसी का धन नहीं ले सकते. ओके, यहाँ तक किया था. नाउ ऑन पेज नंबर 6. नाउ ऑन पेज नंबर 6, फर्स्ट पैराग्राफ. चातक शिशु सर्वम शृणोति. शृणोति मीन्स हियर, सर्वम मीन्स ऑल द टॉक. चातक शिशु मीन्स चाइल्ड ऑफ चातक. द चाइल्ड ऑफ चातक हियर्स द टॉक. सह विचारयति. विचारयति मीन्स थिंग्स. ही थिंक्स. अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा. Shraddha means faith. Kidrushi means how. Palayitum means to follow. Kulacharam means family tradition. Vruddhasya means the old man. And Tatputrasya means his son. Right? So he thinks. What he thinks? Oh, how is the faith of the old man and his son to maintain the family tradition, right? Once again, oh, then exclamatory mark. How great is the faith of the old man and his son to maintain the family tradition. अहम तो कुलाचारम न पालयामि. अहम मीन्स आई. कुलाचारम मीन्स फैमिली ट्रेडिशन. न पालयामि मीन्स नॉट फॉलोइंग, नॉट कीपिंग इट. राइट? सो चातक अभी बोल रहा है, ओके, उसमें ही लिखना इन्वर्टेड कॉमा में ही. अहम तो, बट आई एम नॉट फॉलोइंग द फैमिली ट्रेडिशन. बट I am not following the family tradition. वयं मेघजलमेव पीबामः इति अस्माकं कुलाचारः. वयं means we. मेघजलमेव means rain water. पीबामः means drink. अस्माकं कुलाचारः means our family conduct. Our family tradition or our family conduct is that we drink only the rain water. Right? Once again, our family conduct or our family tradition is that we drink only
the rain water. Tam aham tyaktym pravarte. That tam means that, aham means I, tyaktum means leave, pravarte means going, right? That I was about to leave it. That I was going to leave it. Etat anuchitam asti. Anuchitam means not proper. This is not proper. इन्वर्टेड कॉमा ओवर करोगे, राइट? तो चातक शिशु ने सोचा कि ओ ये जो बूढ़ा आदमी है और उसका बेटा है वो गरीब है, तो अभी देखो अपनी रूल्स जो है, फैमिली कंडक्ट है, वो फॉलो कर रहे हैं, और मैं जो हूँ वो मेरी फैमिली कंडक्ट है कि मैं पानी तालाब का पानी नहीं पी सकता, ओनली आई कैन ड्रिंक द रेन वाटर, वो मैं छोड़ने चला था, राइट? तो ये तो बराबर नहीं है, ऐसा उसने सोचा. सह चिंतयति, ही थिंक्स. पशवः पक्षिणश्चैव मानवाश्च सदाशया रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलमात्मनः. क्या कहा उसने? पशवः मीन्स एनिमल्स, पक्षिणः मीन्स बर्ड्स, मानवाः मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, सदाशया मीन्स ऑलवेज, रक्षन्ति मीन्स प्रोटेक्ट, स्वकुलाचारम मीन्स ओन फैमिली कंडक्ट या तो ट्रेडिशन, रक्षामि कुलमात्मन, रक्षामि मीन्स प्रोटेक्ट्स, कुलमात्मन मीन्स his own to himself, right? So what he says here in this sloka, the animals, birds, the human beings should always follow their family conduct या तो फैमिली ट्रेडिशन. आई विल, रक्षामी मी है ना, इसलिए आई विल फॉलो माई फैमिली ट्रेडिशन एंड प्रोटेक्ट माई फैमिली, राइट? वंस अगेन what he says? Sas in the chintayati, he thinks animals, birds and human being should always follow their family tradition. I will also follow my family tradition and protect my family and myself, right? Last paragraph. एवं विचिन्त्य सह मातरं प्रत्यागच्छति सर्वं वृत्तान्तं च कथयति. एवं विचिन्त्य, विचिन्त्य means thinking, एवं means in this way, सह he, मातरं means mother, प्रत्यागच्छति goes, सर्ववृत्तान्तं च कथयति. सर्ववृत्तान्तं means the whole incident. वृत्तान्तं means incident. कथयति means tells. In this thinking in this way, on thinking in this way, he returns to his mother and tells him the whole thing. Once again, on thinking in this way, he returns to his mother and tells her the whole story. माता संतोषम अनुभवति, शिशवे च आशीर्वादम ददाति. माता, mother, संतोषम means satisfaction, अनुभवति means feels. शिशवे च आशीर्वादम ददाति, शिशवे means his son, आशीर्वादम means blessings, ददाति means gives. The mother is satisfied
माता संतोषम अनुभवति. The mother is satisfied and gives blessings to her son. And gives blessings to her son. अल्प एव काले मेघवृष्टिः भवति. अल्प एव काले. अल्प एव काले means within a short time. मेघवृष्टि भवति. There is rain. In a short period, there is rain. मेघजलं पीत्वा चातकशिशोः तृषा शाम्यते. मेघजलं पीत्वा. पीत्वा means drinking. मेघजलं means rain water. चातकशिशो, child of चातक, तृषा शाम्यते, satisfies his thirst. या तो quenches his thirst. After drinking the rain water, Chataka Shishu, the child of Chataka, satisfies his thirst. Right? After drinking the rain water, the Chataka Shishu, the child of Chataka, satisfies his thirst. Right, children? So this is our story to follow the family rules. Everyone has to follow his family rules. Sometimes we become angry when our parents are saying that no, we should not, you should not do in this way, you should not do in this way. Right? We become angry what these parents are telling us. Right? But they are telling us because they have also followed their family tradition. So we should never be angry with our parents when they are saying or advising us. Right? So now we go to exercise. Exercise number 1. It is on page number 7. विकल्पेभ्यः समुचितं पदं चित्वा लिखत. Right? Vikalpebhyah means choose the correct option from the given words and write it down. तृषा पीडितः शिशुः कस्य समीपं गच्छति. First one. तृषा पीडितः शिशुः कस्य समीपं गच्छति. तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट जनन्याः. सेकंड मेघ शब्दस्य पर्यायः कः. पर्याय मीन्स सिनोनिम्स. तो आप लिखोगे जलदः. देखो स्टूडेंट्स, मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड्स. ओके, आंसर मैंने अंडरलाइन इसमें किया है. थर्ड वन सर्वैः किं रक्षितव्यं. कुलाचारः. फोर्थ वृद्धः कीदृशः आसीत्. मरणासन्नः. शिशुः कस्य प्रतीक्षां करोति. मेघस्य. पुनरपि शब्दस्य उचितं संधि विच्छेदं दर्शयत. तो थर्ड वन पुनः. थर्ड वन इज पुनः प्लस अपि. पुनः प्लस अपि. सेवेंथ वत्स कुलस्य आचारं रक्षितुं त्वया सम्यक् आचरितम्. एतत् वाक्यं कः वदति. डियर स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस इज नॉट देयर इन आवर चैप्टर. ये जो हमको दिया गया है ना सेंटेंस, सेवंथ वन, वो हमारे चैप्टर में है नहीं. तो दोनों आ सकता है. मदर भी आ सकती है और ये वृद्ध आदमी भी आ सकता है. राइट? तो हम दोनों लिखेंगे. इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, देन इफ जननी इज गिवन, देन यू विल राइट जननी. और जननी नहीं दिया है और कुछ और दिया है और वृद्ध दिया है, तो आप वृद्ध लिखोगे. राइट? मगर अभी इसमें दोनों दिया है ना, तो यू विल राइट बोथ द वर्ड्स, जननी एंड वृद्ध. ओके, बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक.
तो मम्मी भी खुश हो सकती है ना कि मेरे बेटे ने फॉलो किया, तो मदर भी आ सकता है और ये फादर वाला भी आ सकता है। ओके, इसलिए दोनों लिखना। अहम तड़ाग जलम पातुम ब्लैंक, तो इच्छामि, क्या लिखोगे? इच्छामि। ओके, सो सेकंड एक्सरसाइज, संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत। द क्वेश्चंस आर इन संस्कृत, सो यू विल राइट द आंसर इन संस्कृत। कह तृषया पीड़ितः आसीत्? क्वेश्चन मार्क। तो कह निकाल के आप लिखोगे चातक शिशुः तृषया पीड़ितः आसीत्। Dear students, I have written only the answer, but you will write the whole sentence in your notebook. Okay? चातक शिशुः तृषया पीड़ितः आसीत्. Okay? Second, चातक शिशुः किं पातुं न अर्हति? तो चातक शिशुः मेघजलं पातुं न अर्हति. कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भविष्यति? तो क्या लिखोगे? कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं मार्गे प्राप्तेन धनस्यूतेन नष्टं भविष्यति. कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं मार्गे प्राप्तेन धनस्यूतेन नष्टं भविष्यति. कृषकपुत्रेण मार्गे किं प्राप्तं? फोर्थ वन. तो आप आंसर लिखोगे कृषकपुत्रेण मार्गे धनस्यूतः प्राप्तम्. शिशोः तृषाः केन नष्टा? तो शिशोः तृषा मेघजलस्य नष्टा. राइट? थर्ड एक्सरसाइज, रेखांकित पदानां स्थाने कोष्टकात् पदं प्रस्थाप्य प्रश्नवाक्यं रचयत. मीन्स क्या आएगा स्टूडेंट्स इसमें? यूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स in place of the underlined words and make interrogative sentences. right? जो underline sentence दिए हैं और उसमें जो words दिए हैं वो आपको देखना है और उसके मुताबिक आपको लिखना है. right? देखो, कह means who, कुत्र means where, का means who, कीदृशः means how, किं means what, and कस्य means whom. right? कह मैस्कुलाइन के साथ जाएगा और का means also who फेमिनाइन के साथ जाएगा. फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग. जननी शिशुं बोधयति, अंडरलाइन वर्ड है जननी. तो जननी निकाल के हम क्या लिखेंगे? का शिशुं बोधयति. राइट? का शिशुं बोधयति? क्वेश्चन मार्क. मार्गे परिश्रान्तः स तिष्ठति. अंडरलाइन वर्ड है परिश्रान्तः. परिश्रान्तः मीन्स थका हुआ. तो कैसा बैठा था? थका हुआ. तो क्या आएगा? कीदृशः. मार्गे कीदृशः सः तिष्ठति. तस्यै सर्वं वृत्तान्तं कथयति. अंडरलाइन वर्ड है तस्यै. तो तस्यै निकाल के आप क्या लिखोगे? कस्यै. सः कस्यै सर्वं वृत्तान्तं कथयति. सो फोर्थ एक्सरसाइज, निर्देशानुसारं धातुरूपाणां परिचयं लिखत. रिकॉग्नाइज द फॉर्म एज डायरेक्टेड. तो मैंने लिखा है. आगे का जो एक है ना धातु, वो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके,
So what will we do? इच्छामि. तो मैंने आपको सिखा है मी वह मह सी थ ती तह अंति. तो उसके मुताबिक मैंने बोला था लास्ट का वर्ड देखो मी है. तो क्या आएगा? वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन. राइट. वर्तमान काल परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन. गच्छति ती है. तो वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन. अर्हसि लास्ट का वर्ड क्या है? सी. तो वर्तमान काल परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन. फिर कथयति लास्ट वर्ड है ती. तो वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन. वदति लास्ट वर्ड कौन सा है? ती. तो वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन. राइट स्टूडेंट्स. फिफ्थ एक्सरसाइज मातृभाषायाम उत्तराणि लिखत. So the questions are in English. So we will write the answer in English. Right students? The questions are in English. So the answer will be in English. And I hope you have understood the chapter well, and that's why you will be able to write the answer of these 4 questions. Okay students? You will be able to write. Okay, so you will write the answer of those 4 questions at your own. Okay, thank you.